क्या ध्यान रखती है मेरा। अच्छा, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। रेडियोएक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब वो खुद होता है ना। हाँ, यू नो अर्थ इज अ बिलियन ईयर्स ओल्ड, बहुत ज्यादा ओल्ड है। कितना दिन से रेडियोएक्टिव एलिमेंट था, वो रेडियोएक्टिविटी किया भी है, तो अभी रेडियोएक्टिव एलिमेंट मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा? वो तो कब से रेडियोएक्टिविटी कर रहा है, खत्म हो जाना चाहिए था ना। कितना सालों से रेडियोएक्टिविटी कर रहा है। कोई कंट्रोल कर सकता है क्या रेडियोएक्टिविटी को? कर सकते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली अभी हम लोग जानते हैं, अभी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जानता नहीं था तब तो कोई आर्टिफिशियली रेडियोएक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर रहा था। सो रेडियोएक्टिविटी वाज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इतना दिनों तक रेडियोएक्टिव एलिमेंट मिलना चाहिए था, सारा रेडियोएक्टिविटी क्या हो जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था। पर अभी भी हम लोगों को रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स मिलता है और इसके बाद भी मिलेगा। कैसे? Because radioactive decay process is a fast order kinetics. You know what is fast order kinetics? Did you know first order kinetics? मतलब उसका जो रेट है, वो रेट उसका क्वांटिटी के साथ साथ डिक्रीज करता जाता है। जैसे जैसे उसका क्वांटिटी डिक्रीज करेगा, वैसे वैसे उसका रेट, राइट। दिस इज द रीजन व्हाई you will find radioactive elements forever, क्योंकि वो कभी भी खत्म नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नेवर एंड्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होना शेष है, ठीक है सर। सो रेडियोएक्टिव रेट लॉ, फर्स्ट डेटा सेट है डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ सेज, क्या बताता है कि द रेट ऑफ रेडियोएक्टिविटी माने द रेट ऑफ डीके ऑफ द न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल minus dndt is directly proportional to n. Minus dndt is directly proportional to n. That means what? Minus dndt is equal to some constant into n. Where n is what? N is the number of nuclei present at any instant, and dndt is the rate of disintegration of radioactive nuclei। मतलब डीएनडीटी का मतलब क्या है कि कितना न्यूक्लियाई एक सेकंड में, कितना न्यूक्लियाई एक सेकंड में क्या हो रहा है, टूट रहा है। कितना न्यूक्लियाई टूट के लोअर एलिमेंट्स फॉर्म हो रहा है। समझ में आया? सो व्हेनेवर वी हैव, अच्छा, दिस लैम्डा इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट। रेडियोएक्टिव डीके, हाँ बोलो। n is the number of nuclei, oh sorry, nuclei नीचे कहाँ? सर नीचे भी हाँ, तुम लोग पता है ना? हाँ, तो डाल दो। पता है तो पहले डाल दो, मतलब राइटिंग लिख लो। अच्छा, रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट लैम्डा क्या है? रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट है, एंड n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट। अब एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है, इससे हम लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। वो अगर पता करना है तो हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं? माइनस dn by n is equal to lambda dt, taking n on one side and t on other side। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। लैम्डा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए। इसको इंटीग्रेट कहां से कहां कर रहे हैं? n नॉट, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू एनी इंस्टेंट, और इसको 0 से t तक। n नॉट क्या है? n naught is the number of nuclei
at any at t equal to 0, t equal to 0 में कितना न्यूक्लियाइड था, t equal to 0 पे कॉन्टोलर न्यूक्लियाइड, ठीक है। तो starting from t equal to 0 to any instant t we are integrating, তাহলে কি হবে dn by n, you know, it gives you ln n, ln মানে you know what is ln, natural logarithm মানে base e, ln n from n naught to is equal to lambda into t, 0 to t করলে এটা t হবে 0 to t, আর আমি লিমিট পুট করলাম সেটা হচ্ছে চন্দ্র খাটা। You know log a minus log b क्या होता है? वो अच्छा ये माइनस साइन अच्छा এটা অ্যাবজর্ব করে নি, তাহলে ln না থাক অ্যাবজর্ব করা দরকার নেই, this will be ln n by n naught, you know this log a minus log b is log of a by b, n naught by n, ना हाँ वो माइनस साइन को इधर लेके आ रहा है माइनस लैम्डा, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये जो है ये लॉग फॉर्मेट में है, तो इसको अगर हम लोग e टू द पावर फॉर्मेट में लेके जाते हैं, सो इट विल बी n by n naught equal to e to the power minus, so n is equal to n naught into e to the power, this equation is called integrated rate law, हाँ एंटी लॉग ये स्टेप में एंटी लॉग लिए, यहां से यहां पर एंटी लॉग, so this is called the integrated rate law where n is the number of nuclei at any instant t, is that clear? so जब number of nuclei at any instant पूछा जाएगा तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, clear to all of you? now see if I ask you how much time will it take to complete पूरा complete dissociation of n तो जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है वो पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन होने के लिए कितना टाइम लगेगा, देखो ओवर हियर वी नीड टू पुट n as 0, so if we put n as 0 you know log 0 is undefined, log 1 is 0, log 0 is undefined, तो ये अगर undefined हो जाएगा तो टाइम विल बी infinite amount of time, मतलब it will take infinite amount of time to complete this process. So whenever we are dealing with first order kinetics हम लोग time of completion कभी नहीं निकाल पाएंगे, so what we do is find out the half life. What is half life? 50% complete right, 50% complete होने के लिए कितना टाइम लगता है, so what is half life is time taken to reduce the number of nuclei to the half of original value or starting value, half of starting value, half of starting value, that means n becomes equal to n naught by 2. So अगर n equal to n naught by 2 आ रहा है तो t का वैल्यू क्या आना चाहिए, from this equation if we refer, और n के जगह में हम लोग क्या डाल रहे हैं, so we'll get ln n naught by 2 n naught is equal to minus lambda t, n naught cancels, this is ln of half, so you know half you can take it, write it as 2 to the power minus 1 and bring the minus 1 in front, तो क्या हो जाएगा minus ln 2 equal to minus lambda t, minus minus cancels, so t is equal to ln 2 by lambda, that is the time taken is ln 2 by lambda, so this is called t half, इसे t half बोला जाता है, the half life period.
half-life period is ln2 by lambda. So these are the working equations AKA and AK. These are the working equations, alright? And you know ln2 is 0.693, right? People now ln2 0.693 है ना? अगर न्यूक्लियर असाइनमेंट दिला हमने दिया हाँ 0.693 ठीक है ln2 is 0.693 so 0.693 by lambda alright আচ্ছা এবার একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে বাকি সব বলা হয়ে গেছে শুধু আচ্ছা there is a way we can use this half life period এই half life period টাকে হ্যাঁ কি বলছো Acha, see, there is one question asked most of the times. Number of nuclei left. Number of nuclei left after n half-lives. How do you find out this? Number of nuclei left after n half-lives. मतलब n तो half-lives के बाद कितना न्यूक्लियाई लेफ्ट होगा देखो आफ्टर वन हाफ लाइफ how many nuclei left n naught by 2 so if there are n such half lives are taking place it will have n naught by 2 whole to the power n that will be decreased তাই তো তাহলে এক্সপ্রেশনে যা আসে সেটা হচ্ছে n by n naught is equal to half to the power n when n is the number of nuclei left তার মানে n is equal to n naught into half to the power 10 so this is the final number of nuclei left after n half lives right আচ্ছা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমরা করিনি সেটা হচ্ছে the unit of radioactivity means DNDT ठीक है so ये DNDT का SI यूनिट है becquerel अच्छा कैपिटल B obviously अच्छा the SI unit is becquerel becquerel means 1 disintegration per second मतलब एक न्यूक्लियाई अगर 1 सेकंड में डिसइंटीग्रेट करेगा तब उसको हम लोग 1 becquerel and in short we write is BQ but mostly used is Rutherford and Curie 1 Curie is 3.7 into 10 to the power 10 becquerel and Rutherford one Rutherford equal to 10 to the power 6 becquerel clear আচ্ছা আরেকটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে মিন লাইফ আর এভারেজ লাইফ সো for that we integrate from 0 to infinity and then find out the average value क्या होगा
कौन सा? हाँ मतलब यहाँ से लिया है, यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू पुट किया है n के जगह में n0/2, n के जगह में n0/2 वैल्यू पुट किया है। वैल्यू पुट करने के बाद जो टाइम निकला दैट इज कॉल्ड टी हाफ, उसे टी हाफ बोलते हैं। हाँ, a mean life or average life এটা বলে দিই। mean or average life কত হয়? average life is equal to is n0/lambda। n/2 by lambda জায়গায় 1/lambda। Is that clear? এখনো কি ঠিক ঠিক লিখছিস? লজ্জা করে না?